Auzu billahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 7th subject Social Science Part 3 Social and Political Life. प्यारे बच्चों, हम पिछले कई दिनों से सोशल साइंस का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं. इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है ऑन इक्वलिटी. ऑन इक्वलिटी में आज हम दो स्टोरीज पढ़ेंगे. एक तो है स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि की, जो कि एक दलित राइटर हैं, उसकी स्टोरी. ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ a famous Dalit writer. In his autobiography Juthan, he tells about how he was asked by the principal of the school to clean the school building and playground for 3 days when he was in class 6th. When his father came to know about this, he confronted the teachers and walked away from school with Om Prakash. प्यारे बच्चों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि एक फेमस मशहूर दलित राइटर था. दलित तो कल हमने डिस्कस किया था कि दलित हिंदुस्तान में जो सबसे निचले तबके के रहने वाले लोग हैं, उनको वो अपने आप को दलित बोलते हैं. ये भी दलितों में से एक था, जो कि एक राइटर था, और उसने लिखी है एक किताब इन हिज ऑटोबायोग्राफी लिखी. ऑटोबायोग्राफी का मतलब है जो अपनी ज़िंदगी के मुतालिक लिखते हैं, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. अगर कोई दूसरों की ज़िंदगी के बारे में लिखेंगे तो उसको बायोग्राफीज कहते हैं. इसने ऑटोबायोग्राफी लिखी, यानी अपनी ज़िंदगी के बारे में. उस बायोग्राफी का नाम ऑटोबायोग्राफी का नाम उसने रखा है जूथान. इस जूथान में उसने लिखा था, ही टेल्स अबाउट हाउ ही वाज आस्क्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल टू क्लीन द स्कूल बिल्डिंग एंड प्ले ग्राउंड फॉर 3 days. इसमें उन्होंने लिखा कि किस तरह स्कूल के प्रिंसिपल ने उससे कहा था कि स्कूल की बिल्डिंग और प्ले ग्राउंड को साफ़ करो. यानी 3 दिन तक लगातार प्रिंसिपल ने उससे स्कूल और ग्राउंड साफ़ करवाया, जबकि वो उस वक़्त 6th क्लास में पढ़ते थे. यानी कास्ट की बुनियाद पर, यानी ये निचले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं. When his father came to know, जब उसके वालिद को ये पता चला, about this he confronted the teachers, तो उसने टीचरों और प्रिंसिपल को काफ़ी डांटा. एंड walked away from school with ओम प्रकाश, और ओम प्रकाश को उस स्कूल से बाहर ले आया. इस तरह यानी उसने ये देखा है कि किस तरह से निचले तबकों के लोगों को के साथ इंडिस्क्रिमिनेट करते हैं, यानी उनको अपने से निचले मानते हैं. दूसरी स्टोरी है स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी. मिस्टर एंड मिसेस अंसारी वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी. मिस्टर और मिसेस अंसारी, ये मियाँ बीवी, अपने लिए शहर में एक अपार्टमेंट खरीदने चाहते हैं, यानी रेंट पर लेना चाहते हैं, जिसमें वो रहेंगे. The property dealer showed them an apartment and Ansaris liked it very much and decided to take it. तो प्रॉपर्टी डीलर ने उनको एक अपार्टमेंट दिखाया, यानी एक मकान दिखाया, तो वो दोनों को बहुत पसंद आया. यानी अंसारी को, यानी मिस्टर अंसारी और मिस अंसारी दोनों को ये घर पसंद आया और वो राज़ी हो गए उसको रेंट लेने पर. बट व्हेन द लैंड लेडी फाउंड आउट देयर नेम्स, लेकिन जब कि जिसका ये मकान था, यानी मालकिन मकान को जब ये पता चला कि ये मुसलमान हैं, यानी मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने शी मेड एन एक्सक्यूज़ अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु एट मीट. तो उसने ये कहकर उनको मना कर दिया कि हम उनको मकान नहीं देंगे जो मीट खाते हैं, क्योंकि मुसलमान मीट खाते हैं. इस वजह से उन्होंने उनको मना कर दिया, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग और बसते हैं, वो मीट नहीं पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम उन लोगों को ये घर किराए पर नहीं देंगे जो मीट खाते हैं. द हाउस टू समवन हु एट मीट. द Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. जब अंसारीज ने, यानी मियाँ बीवी और इस प्रॉपर्टी डीलर ने ये सुना
اس لیڈی سے کہ ہم ان کو یہ گھر رینٹ پر نہیں دیں گے جو میٹ کھاتے ہیں. تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی کیونکہ پاس والے مکان میں سے ان کو مچھلی پکانے کی مہک آئی تھی، یعنی بو آئی تھی. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس نے ہمیں کیوں منع کر دیا ہے، کیونکہ اگر پاس والے مکان میں ہمیں مچھلی پکانے کی بو آئی تھی یا سمیل آئی تھی تو یہ ہمیں اعتراض کرتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں دیں گے جو میٹ کھاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ when they were given the same excuse by many people، جب ان دونوں کو کئی جگہوں پر اس طرح کے اعتراضات آئے تھے کہ ہم ان کو گھر نہیں دیں گے جو میٹ کھاتے ہیں، the property dealer told them that they might want to change your name and call themselves Mr. and Mrs. Kumar. تو پراپرٹی ڈیلر نے ان دونوں کو کہا تھا کہ آپ اپنا نام چینج کیجئے اور آپ اپنے آپ کو بلائیے مسٹر اینڈ مس کمار، مسٹر اینڈ مسز کمار، تبھی آپ کو کوئی گھر کرائے پر مل سکے. It took a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place on the rent. لیکن اس سے پہلے کیا ان دونوں نے، میاں بیوی نے، یہ نہیں مانا کہ ہم اپنے نام کو چینج کریں کیونکہ ہم مسلم خاندان سے، ہم مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ گوارا نہیں کریں گے کہ ہم اپنا جو اصلی ہماری شناختیں ہیں اس کو چھپا کے رکھیں، ہم ایسا کام نہیں کریں گے. تو اس طرح ان کو ایک پورا منتھ گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہو گئے، یہاں تک کہ ایک لڑی ان کو ملی جو ان کو گھر دینے پر راضی ہوئی. اس طرح ان کو آخرکار یہ گھر ملا. لیکن یہاں پر ہمیں یہ دیکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کس طرح سے کاسٹ سسٹم تھا. یعنی ایک تو یہ ان دونوں کو، میاں بیوی کو یعنی انصاریز کو، اس وجہ پر گھر نہیں مل رہا تھا کیونکہ یہ مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ہندو یا باقی دھرم کے لوگ ان کو مکان کرائے پر نہیں دیتے ہیں کیونکہ یہ مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اس طرح کاسٹ سسٹم کس طرح ریجڈ یہاں تھا. تھینک یو.